हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वाला चैप्टर खत्म कर लिया है। मैं ले आई हूँ उसके क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स। द प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे एनिमल्स को उनकी खुद की हैबिटेट मिलती है, जहाँ पे वो अच्छी तरह रह पाते हैं। तो उसका आंसर होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज एंडेमिक स्पेशीज़। जैसा कि आपने पढ़ा था एंडेमिक स्पेशीज़ में कि स्पेशीज़ जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में फाइंड आउट किए जाते हैं उनको एंडेमिक स्पेशीज़ कहते हैं। आपको जाइंट स्क्विरल तो याद ही होगा, जो मैंने आपको चैप्टर के दौरान पढ़ाई थी। अब है द माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, क्योंकि उनके वहाँ बहुत कोल्ड क्लाइमेट होते हैं जिसकी वजह से वो एग्स को ले नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो मूव करते रहते हैं ताकि वो एग्स ले कर पाए। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है और बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसमें आपका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एन एरिया प्रोटेक्टेड फॉर एनिमल्स वेयर एनिमल्स कैन लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। In these centuries, hunting, poaching, grazing, felling trees, etc. are strictly prohibited. बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होगा, एन एरिया विच इज़ कंजर्व टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया इज नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व। अ बायोस्फीयर रिजर्व इज consist of many protected areas like sanctuaries, national parks, lakes, mountain, etc. अब देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या आएगा, देर आर अबाउट 440 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, देर आर 15 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो जू इज़ व्हाट, इट इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल हैबिटेट, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल लिव इन नेचुरल हैबिटेट। जू क्या है, द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फॉर पब्लिक व्यू एंड दे आर स्प्रेड इन स्मॉल एरियाज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द एनिमल आर प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड इन वेरी लार्ज एरियाज। द एरियाज आर प्रोहिबिटेड फॉर हंटिंग, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज एक्सेट्रा। अब देखो हमें किस में डिफ्रेंशिएट करना है, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पेशीज़। तो इंडेंजर्ड स्पेशीज़ मीन्स the species which are at the verge of extinction or which are required to be protected and conserved are known as endangered species. वहीं extinct species, the species which are no more exist on the earth are known as extinct species. Example of endangered species क्या होता है, टाइगर, वाइल्ड, बेफेलो एक्सेट्रा, और extinct species का है डायनासोर। अब है हमारे पास फ्लोरा और फोना। तो फ्लोरा का मतलब क्या होता है, ऑल प्लांट लाइफ अकरिंग इन द एरिया इज़ नोन एज फ्लोरा, और फोना का मतलब ऑल एनिमल लाइफ अकरिंग इन दैन एरिया इज़ नोन एज फोना, ठीक है। उसके बाद फिर एग्जांपल ऑफ फ्लोरा आर सैल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एंड एक्सेट्रा आर फ्लोरा। और एग्जाम्पल ऑफ फोना आर चिंग, खरा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा आर द फोना, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। तो वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड लाइफ डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट्स हैं, तो अब इसका पूरा आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स इज डिस्ट्रॉयड बाय डिफॉरेस्टेशन। विदाउट द नेचुरल हैबिटेट एनिमल्स आर लेफ्ट विथ नो प्लेस टू लिव एंड ब्रीड। As a result of this, many animals are at the verge of extinction. Dear student, तो ये तो आपको पता ही होगा कि वाइल्ड एनिमल्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर डिफॉरेस्टेशन होता है, राइट। तो अभी मैं इतना समझा नहीं रही हूँ डियर स्टूडेंट, मैं आपको खाली रीड करके बता रही हूँ, क्योंकि डियर स्टूडेंट मैंने चैप्टर पूरा अच्छी तरह समझा रखा है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आया तो आप मेरे चैप्टर में जाकर देख सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये वीडियो सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए है। अब देखो डियर स्टूडेंट ना, एनवायरनमेंट क्या है, डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिजल्टेड इन द ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड नॉट दैट एब्जॉर्ब बाय प्लांट एंड इट गेट accumulated in the atmosphere. It has an adverse effect on our ecosystem. डियर स्टूडेंट, अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग को बहुत अच्छी तरह से समझना है तो आप मेरा वीडियो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं। अब है विलेजेस, रूरल एरियाज। द रूरल एरियाज लार्जली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर फ्यूल, फ्रूट्स, फूड एक्सेट्रा। डिफॉरेस्टेशन हैज reduced their resources and uninhabited animals are also danger for villages. Cities is urban area. Cities are not directly affected by deforestation, but the changes in the climate result in calamities such like flood, drought, which affect the cities also. It leads to global warming.
अब देखो, अर्थ डिफॉरेस्टेशन हैज़ कन्वर्टेड द फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट. द नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड एंड droughts are also the result of deforestation. The climate of earth has been changed due to the deforestation. अब आपका F जो कि है the next generation, deforestation affected our climate very much. Many species are at the verge of extinction because of deforestation, and some species are already extinct. The next generation may not be able to see many beautiful, attractive fauna and flora. It may have to suffer from effects of global warming. No fuel, no paper, etc. ठीक है. आप क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ. व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज? डियर स्टूडेंट, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज. तो आंसर नंबर 4 क्या होगा? इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, द रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज एंड द चेंजेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज विल इंक्रीज. It will also lead to the decrease in water holding capacity of soil, which will result in flood. Animals' life will also get affected. अब आता है द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड. अ सर्वाइवल ऑफ एनिमल विल बिकम डिफिकल्ट इन इट देयर नेचुरल हैबिटेट इफ डिस्टर्ब. दे विल नॉट हैव any space to live and to breed. As a result, they will not survive, and also because of scarcity of food, the animal has started wandering in the neighboring villages and targeting the domestic animal as their prey. Top layer of soil is exposed. If the top layer of soil is exposed, it will wash away with the water. The removal of top layer will gradually convert fertile land into the desert. Moreover, the soil washed away with water will be deposited in the river bed, resulting in the decreasing the depth of rivers. The chances of flood will increase many folds. अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर स्टूडेंट? आंसर इन बिलीफ. वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. Protected forests are also not completely safe for wild animal. Why? Some tribal depends on the jungle. How? What are the causes and consequences of deforestation? What is red delta book, and what do you understand by term migration? तो डियर स्टूडेंट, इन सब के आंसर आपको यहाँ पे दिए हैं. अब मैं फटाफट इनको रीड करती हूँ डियर स्टूडेंट. ये देखो, we should conserve biodiversity because it is important for all living organisms and for environment. We should conserve biodiversity to save from becoming extinct. उसके बाद protected forests are not completely safe for wild animals because poachers have found access in these areas and killing animals. There is need to make strict rules against poaching and tree passing. Some tribals are still dependent on the jungle for their food, fuel, wood, shelter, etc. They live in the forest and are dependent on them. The main cause of deforestation is growing urbanization and industrialization. Need for more land and resources have led to the cutting down of forests. The consequences of deforestation are desertification and natural calamities. It has also rendered many species of plants and animals unprotected and unconserved. The Red Delta books keep the record of all endangered animals and plants. Different records books are maintained for endangered animals and endangered plants. For the purpose of breeding and specific purposes, some species of birds and animals move from their habitat to some other habitat. The bird move to far away areas during a particular time because of climatic changes and return to their original habitat after some time. This periodically of some species is known as migration. Question number 6 dear student क्या है? देखो फटाफट. In order to meet the ever increasing demands of victory and shelter, the trees are being continually cut. Is it justified to cut trees for such projects? Discuss and prepare a brief report. The ever-increasing demands in factories and for shelter, trees are being continually cut. If we have to retain our green wealth for generations, plantation of more tree is only option. Cutting of trees can only be justified when reforest is done.
Reforest is restocking of destroyed forest by planting new trees. The trees planted should be of same species that are generally found in the forest. We should plant many trees as we cut. Deforestation can take place naturally also if the land is left undisturbed. The forest will establish itself over a long period of time. We have damaged our forests. Dear student, what is written? We have damaged our forests to such extent that it is difficult to retain the green wealth for our future generation. So it is important to plant more trees and to find out of ways of recycling and restoring our natural wealth. Dear student, question number 7. How can you contribute to maintenance of green wealth of your locality? Make a list of actions to be taken by you. The green wealth of the locality is the responsibility of every resident. We should grow more and more plants in the locality. The resident should work together to conserve green belt of the locality. Also, they should be taught about the consequence of deforestation and global warming. I plant trees in my locality. I also teach the small children and encourage the slogan one man, one tree every year. So that every resident plant at least one tree in a year and take care of it. तो डियर स्टूडेंट, मैं तो अपनी लोकेलिटी में प्लांट करती हूँ जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप भी करते होंगे बहुत सारी चीज़ें, आई होप, है ना. अब देखो क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द रिड्यूस्ड रेनफॉल. Plant needs carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees will mean that the less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays affected by Earth. The increase in temperature on the Earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. तो डियर स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में. फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट. आइडेंटिफाई टू शो द लोकेशन ऑन योर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. ये तो डियर स्टूडेंट आपको अपने हिसाब से ही करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं नहीं करा सकती ना, राइट. तो आप लोग इसको अपने हिसाब से करिएगा. अब देखो, वाई शुड पेपर बी सेव. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाई विच यू कैन सेव पेपर. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आंसर दिया है, वैसे आपको आना चाहिए. Paper is used in our day-to-day life. Thousands of trees are cut to fulfill the demands of paper. If the trees are being cut for paper, there may be one day we will be left with no trees. So paper should be saved and should be used intelligently. The ways by which we can save paper are: we should recycle the waste paper, we should not litter the paper here and there, paper should be sent through the proper channel of recycling, we should not tear our old notebooks and donate to the poor children so that they can reuse those notebooks, we should encourage buying recycled paper products, we should avoid taking paper bags from the shops, taking paper bags from the shop. Instead we should carry jute bags, dear student. Okay, now see, complete the puzzle. Species on the verge of extinction. इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? कौन से स्पेशीज़ होते हैं ऐसे बताओ? एंडेमिक स्पेशीज़ या इंडेंजर्ड स्पेशीज़? आई होप डियर स्टूडेंट दैट यू नो द आंसर, राइट. एंडेंजर्ड स्पेशीज़. अब देखो यहाँ पे, a book carrying information about endangered species, that is red delta book. Then the consequences of deforestation is what, dear student? Consequences of deforestation, yeah, anybody of you know? I think I am asking just like this only, huh, dear student. If you know, that's very good. Okay, if you don't know, then also you can do. Biodiversity. Okay, dear student, now see, species which have vanished, that is extinct, and then we are having variety of plants, species found only in a particular habitat, that is endemic species. Variety of plants, animals and microorganisms found in the area, that is what, dear student? I hope that you all know. Yeah,
दैट इज़ डियर स्टूडेंट योर बायोडाइवर्सिटी। डियर स्टूडेंट, जो आपका 5th वाला क्वेश्चन था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डियर स्टूडेंट वो है आपका डेजर्ट्स। अच्छा, डेजर्ट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, या क्योंकि आपको जो आपका ये है ना पजल, यहाँ पे आपका एस से दिया है, तो इतने शब्दों में आपका एक डेजर्ट ही वर्ड है जो फिट आ पाएगा, राइट। वैसे तो कितने कॉन्सिक्वेंसेज है ऑफ डिफॉरेस्टेशन, राइट। तो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव completed our chapter conservation of plants and animals. From the next video we are going to start our next chapter. Thank you so much for watching our video. I hope that you like it and enjoy our video. Thank you so much, and do subscribe our channel for more videos and updates. Thank you so